Okay, I'm so sorry for the interrupt. So I was talking about what the use of indexes as well as what its SQL syntax for what indexes. So you can see that the use is like speed up the query. Then we can see that we can able to retrieve the data and it is same as your index of book. So I was talking about what the create index syntax, and this is what the syntax where create index name on table, column name 1, column name 2, column name 3. So you can use this create index command. Yesterday only I have already cleared this particular part to you, but I'm repeating it again. Create index command is normally used to create what the index, and it will be stored into separate file. Okay, and you can see that create index name on table name, and there will be a column. Let's look at one of the examples so that it will clear you, where example will tell you index, create index, the name of index will be what? IDX, then IDX underscore name on this particular table, that is what? Relation persons, and in that we are creating index on two different column, that is last name as well as what? First name. So what it will do, it will combine the value of last name and first name, and accordingly it will create, it will create index. So this index, the benefit of index will be what? Always remember, index will be sorted on entire name, and sorting, due to sorting we can use directly binary search tree algorithm, and you all are aware that instead of linear searching, binary search has great advantages that gives you great speed. So the moment you are searching that record on this index file, then it will give you, it will retrieve what? Data from actual database. So this is what you need to understand. The syntax is very straightforward. Create index, then the name of index on person. Okay, that is the name of table, and the column name that you can mention. Mind it, you can create index on single column or group of column. Now the next part regarding this is indexes, unique index. Now when we create index, normally if it has duplicate value, it will create space for that as well. For example, if you have a table, in that, suppose we are creating index on first name, and in first name suppose Mahesh, and Mahesh is coming again and again, so it will consider both the values Mahesh and Mahesh. Okay, so if you want that redundant value should be avoided in index, you can create index using the keyword like unique. So create unique index. So instead of create index, you need to mention create unique index, then index name, and other particular syntax will be similar. You need to simply add unique index, unique as one of the keyword. So if you observe here, the example is like this: create unique index website IDX on website site name. So whatever site name which will be there, this index websites underscore IDX, I have used this IDX to mention what it is index. So this IDX, this websites underscore IDX will create index on this website, on this site name of what? Website. And due to this unique keyword, it will avoid, or it will ultimately ignore the duplicate values. So that's the beauty of index, unique index. As we all are aware that when we are creating index, always remember there will be a drop. Always remember to, just for your sake of knowledge and for your sake of understanding, you should always have remember one thing: when create command will come, whatever which is created by create will also be able to drop using what? Drop. So always remember, create and drop is always a pair. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट को कई बार डिलीट इंडेक्स ऐसा आप लोग एग्जामिनेशन में लिख देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर इट इज ड्रॉप इंडेक्स. सो व्हाट इफ यू हैव क्रिएटेड एनी ऑफ द इंडेक्स, यू कैन सिंपली यूज द सिंटैक्स ड्रॉप index underscore name. Okay, means you can mention here the name of index. Example is given here. We have created this websites underscore IDX as an index by firing this command. When we fire this command, drop index websites underscore IDX, naturally it will drop, means it will permanently remove that index command. Always remember, whenever drop command is coming, then the commands like rollback will not work. So always remember, rollback will not have any sort of effect for this kind of drop command. Okay, it can affect to your update, delete, as well as what? Insert commands. So this is what all about the indexes that we have seen. Now let's look at the sub queries.
Okay, this is very, very important concept. Select queries with what and various clauses. So in that, now we are actually what focusing more in depth about what select query. Last time we have seen the select query like कैसे देखा था हम लोगों ने सिलेक्ट क्वेरी को, जिसमें सिंपली हम लोगों ने सिलेक्ट का, फ्रॉम का और वेयर का इस्तेमाल किया था, राइट? नाउ वी विल ड्रिल डाउन अबाउट दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट क्वेरी. इसमें और डीप में हम लोग जाएंगे और इसके डिटेल्स जो भी वो देखेंगे. Now from that we have to take very first part, that is what the subquery. Now this subquery, the meaning of subquery means what? Please remember the meaning of subquery means what? It is query within query. ओके, इट इज क्वेरी विद इन क्वेरी. यानी आप सिलेक्ट में सिलेक्ट को कॉल करोगे, या सिलेक्ट में इंसर्ट को कॉल करोगे, या सिलेक्ट में डिलीट को कॉल करोगे, या डिलीट में सिलेक्ट को कॉल करोगे. लाइकवाइज आप क्वेरी में क्वेरी को कॉल कर रहे हैं. दैट इज नोन एज सब क्वेरी. आई एम अगेन रिपीटिंग, सब क्वेरी मीन्स व्हाट? Query within query. Okay, so let's look at subqueries within select statement. Okay, the syntax is very straightforward. You can use this particular part here where select column name from table name, where column means what? Select from where. ये अपना नॉर्मल क्वेरी का सिंटैक्स हो गया जो हम लोगों ने दिया, और उसमें आप लोग और एक सिलेक्ट में एक सिलेक्ट फिर से क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? सब क्वेरी. यहां पर आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. यू आर कॉलिंग व्हाट? सब क्वेरीज हियर. सो सिलेक्ट में सिलेक्ट को आप लोग कॉल कर रहे हैं. ओके, रेस्ट ऑफ द सिंटैक्स इज सेम. आपको यहां पर भी सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर का क्या करते आएगा? इस्तेमाल करते आएगा. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. Now this example will clear you about select star from employee, यानी employees table से हम लोगों को सारे fields चाहिए. Where ID means employee ID जो भी है, where ID in, ये ID in यानी ये क्या करेगा? यहाँ पे group of values जो भी select किए रहेंगे उसको वो consider करेगा. So ID in select, again we are writing what? Subquery select ID from employee, and we have given what? This particular condition, where the condition itself will what? Tell us whether this particular query means ये जो where के साथ में जो भी condition हम लोगों ने दिया हुआ है, इस queries में जितने भी IDs आएंगे, ऐसे group of IDs को ये क्या करेगा? मैच करेगा, और उसके सारे records हमारे सामने क्या कर देगा? डिस्प्ले करेगा. So my dear students, here you should understand, if the salary itself is what? Less than 4500 or greater than 4500, ऐसे आईडी को, ऐसे एम्प्लॉय आईडी को ये क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा, और वो सारे एम्प्लॉय आईडी किसके साथ में मैच करेगा? या इस एम्प्लॉय आईडी के साथ में. मींस व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कॉलिंग सिलेक्ट under what? Select. This is known as what? Subquery. Okay, I know that you need what? Practice. I have already told you that you can use that app, mobile app, where you can able to practice all DML queries. I have already told you, you cannot use DDL queries with that mobile app, but you can always run all DML queries using that app. So I request everyone, you need what? Practice for this SQL commands. Now let's look at the next part, that is the subquery again with as per as select clause is concerned. Now see, you can see the example. You will understand by this example whatever we have, whatever queries I have already told you, you can understand here. The employee IDs are given here and the salaries are given here. Okay, and what was our query? Do you remember? The query was simply that we have called select star from employee. This is what the employee table, select star from employee, where employee ID in, और उसमें हम लोगों ने और एक क्वेरी दिया था, select ID from employee where their salary is what? Greater than 4500. अब देखिए 2000 वाला सैलरी नहीं आएगा, 1500 वाला नहीं आएगा, 2000 वाला नहीं आएगा. कौन से सैलरी आएंगे? 6500, 8500 और ये वाला. तो कौन से आईडीज आएंगे? 4, 5 एंड 7. ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता तो ये भी आता, लेकिन फिलहाल क्या आएगा? 4, 5 एंड 7. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी दैट द क्वेरी रिजल्ट विल बी 4, 5 एंड 7, and as we have used star, so it is actually showing us entire record of the tuple which are matching with that ID value. So this way we can use the subqueries and the queries within what? The queries. Now the next part of subqueries will be, we can use subqueries with insert statement. Last time we have seen the subqueries with what? Select statement, and now we will see the subqueries with what? Insert statement. Its syntax is again same. The subquery is fixed. That is what that we have given with select, but we are using that with what? Now insert. Earlier we have used it what? Select in select, and now we are using insert into what?
select. So now insert into table, whatever syntax of insert table which will be there, instead of values ए वर्ड आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिलेक्ट कमांड सब क्वेरी उसके साथ में दोगे, तो इसमें से जो भी वैल्यूज निकल के आएंगे वो सारे वैल्यूज इसको क्या कर देगा, कॉपी करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस ये वाला जो भी क्वेरी है इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर जो भी एग्जांपल दिया है, इसके अलावा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को ये एग्जांपल शायद पसंद आएगा क्योंकि यू ऑल आर यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली। Now suppose I'm using a query. हमारे सामने पहले क्वेश्चन क्रिएट करना जरूरी है। What is the question? I want all the students of TCOM, okay, all students of TCOM, those who got 40% marks. ओके, यानी जितने भी पास हुए स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे क्या करना है, TCOM में देना है। कहां से? फ्रॉम, ओके, फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम SECOM टेबल। तो SECOM से मुझे सारे स्टूडेंट्स कहां पर चाहिए, TCOM में। मैं कमांड किस तरीके से लिखूंगा, इंसर्ट इनटू, ओके, आपको जो भी मींस यहां पर आप सिंटैक्स देखिए, इंसर्ट इनटू, यहां पर आपको क्या देना है, TCOM। सो यू विल मेंशन हियर TCOM, ओके, और TCOM के साथ में आपको जितने भी उसके फील्ड्स के नाम है वो आप यहां पर दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, आपको लगता है कि सारे के सारे फील्ड आपको SECOM से चाहिए, क्योंकि आपका नाम देखिए ऐसे के ऐसे ही है, SECOM से, FECOM से, TCOM में आप BCOM में जाओगे तो भी वहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इंसर्ट इनटू, अब मैं यहां पर कमांड दे रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SECOM, ओके, मैंने यहां पर SECOM भी दिया, और यहां पर कमांड देता हूं वेर marks of this student should be greater than or equal to 40. अब देखिए ये वाला कमांड आपको समझ में आएगा। What we have done, we have called insert into TCOM। मुझे TCOM में कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, मुझे SECOM से रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। और कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेंगे, 40 रहेंगे। सो दोस्तों, दिस वे यू कैन एबल टू कॉपी, दिस इज अल्टीमेटली नोन एज व्हाट, इट इज अल्टीमेटली नोन एज कॉपिंग। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपको कमेंट में दे के यहां पे बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द कॉपी, यानी आप कंडीशन बेस्ड क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉपी कर रहे हैं। ओके, यदि आपको लगा कि पूरा रिकॉर्ड आपको चाहिए, एज इट इज आपको पूरा रिकॉर्ड चाहिए, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, तो आप क्या करोगे, कमांड दोगे, सिंपली इंसर्ट इनटू TCOM, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, SECOM, और कोई वेयर क्लॉज देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये वाला कमांड कॉपी कमांड जैसे क्या करेगा, एक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, insert command can also be used, okay, with what, select command, okay, and when we are using insert with select, ultimately we are copying records from one table to another table. We are ultimately copying records from one table to another table. Okay, we can even use what, where clause, that will be known as conditional copy. Means what, we just need selected records and we can able to copy selected records in this particular case. So dear friends, you should understand the use of insert into with what, select command. This is really wonderful command, heavily used into what industry nowadays. So this is what an example that I wanted to give you, and this is what I have already cleared you regarding what the command, that is what subqueries with insert into. Okay, you can see this particular example as well. Insert into employee, backup, select star from employee, where ID in, select ID from employee। यानी ये क्या कर रहा है, पूरे एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर एम्प्लॉय में कॉपी कर रहा है। इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर सेइंग इट इज अल्टीमेटली नोन एज व्हाट, इट इज बैकअप कमांड। ओके, मींस वही पूरे डेटाबेस को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली कॉपी कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू कैन एबल टू यू कैन एबल टू वर्क आउट विद द queries like select or insert with what, select. Now, the way we are giving what, insert command, we can even give what, update command. Syntax is again straightforward. Update table, set column name, new values, where value, and then we can mention here what, some condition. Select column name from table name, where condition. ओके, मींस यहां पर आप फिर से क्या कर सकते हैं, अपडेट कमांड, जैसे हम लोगों ने इंसर्ट कमांड के साथ में सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल किया है, वैसे ही हम लोग यहां पर अपडेट कमांड के साथ में भी सिलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। सो सी दैट हियर अपडेट एम्प्लॉइज, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.25, यानी क्या, 25% सैलरी में राइज यदि करना है तो यहां पर क्या किया जाएगा, अपडेट एम्प्लॉय नेम, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.25, वेयर एज इन, यहां पे कंडीशन दिया जा रहा है एज इन, एंड सम सब क्वेरी दैट वी हैव रिटन, दैट इज सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर बैकअप, एंड अगेन वी हैव गिवन व्हाट, वेयर क्लॉज।
सो दोस्तों यहां पर भी मैं आपको एक हाथ कमांड जो भी है वो दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर कमांड। ओके, यदि आपको ऐसा लगा कि आप सभी लोगों को बोनस मार्क्स देने हैं, ओके ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और यदि यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप सभी लोगों को बोनस मार्क्स देने हैं, जिनको भी जो भी मार्क्स आए हैं उनको हम लोगों को क्या करना है 10 मार्क्स ऐड करके देना है। कमांड किस तरीके से लिखा जाएगा, हम लोगों को क्या करना है अपडेट करना है। ओके व्हाट वी नीड टू अपडेट, वी नीड टू अपडेट टी कॉम टेबल। ओके टी कॉम का जो भी टेबल रहेगा उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेटिंग अप व्हाट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स है उसमें +10 जो भी है आपको एक एडिशनल ग्रेस जो भी है वो दिया जा रहा है, ऐसे आप कंसीडर कीजिए। ओके लेकिन ऐसा ग्रेस किस कौन से स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोगों को सिंपली ग्रेस देना है वेर वेर मींस यहां पे मैं सिंपली आपको सिंपलिसिटी के लिए क्या कर देता हूं न्यू लाइन पर ले लेता हूं वेर। ओके वेर रोल नंबर, ओके और आपको यहां पर क्लॉज दिया इन, और यहां पर हम लोग कमांड दे रहे हैं सिलेक्ट ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको फर्स्ट क्लास आया है। ओके इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टी कॉम वेर, ओके यहां पर मैं वेर क्लॉज दे रहा हूं, वेर मार्क्स जिसको ऑलरेडी मार्क्स कितने आए हुए हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ओके डोंट वरी अबाउट दिस कमांड, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको ऐसा कोई ग्रेस नहीं दिया जा रहा है, जस्ट आपको बता रहा हूं मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। व्हाट वी आर डूइंग अपडेट टी कॉम, कौन से टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, थर्ड ईयर कंप्यूटर के। क्या अपडेट करना चाहते हैं, मार्क्स, मार्क्स में क्या करना चाहते हैं 10 मार्क्स एडिशन करना चाहते हैं, जो भी पुराने मार्क्स आपके हैं उसमें 10 मार्क्स देना चाहते हैं। कौन से स्टूडेंट को, जिनके रोल नंबर किसके साथ में मैच होंगे, इस क्वेरी के साथ में। ये वाला क्वेरी समझिए क्या है, ये क्वेरी क्या है, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टी कॉम वेयर मार्क्स इज व्हाट ग्रेटर देन 60, यानी ऐसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर जिसके मार्क्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाए। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या बात हुई, जिनको 60% है उनको 10 मार्क की क्या जरूरत है, जिनको लेसर है 40 से उनको जरूरत है। तो मैं यहाँ पे और आपके लिए, आपके खुशी के लिए ये वाला कमांड कर देता हूं। देखिए यहाँ पर आपको कमांड दिखाई देगा सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टी कॉम वेयर मार्क्स इज व्हाट लेस देन 40, यानी जो स्टूडेंट्स को बिलो 40 मार्क्स है ऐसे स्टूडेंट को ग्रेस दिया जाएगा 10 मार्क का। दिस इज नोन एज व्हाट अपडेट। कभी कभी यूनिवर्सिटी में ये वाला कमांड जो भी है इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका एक हाथ पेपर टफ निकलता है या कोई रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उस केस में कितने मार्क्स के रॉन्ग क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स जो भी है वो क्या किए जाते हैं प्लस किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ कमांड्स आर स्टिल यूज्ड इनटू मार्केट। व्हाट इज इट, इट इज अल्टीमेटली व्हाट, इट इज अल्टीमेटली सब क्वेरी विद इन व्हाट अपडेट। तो अपडेट के अंडर आप लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट ये सब क्वेरी का क्या किया, इस्तेमाल किया। सो लेट्स अगेन फोकस ऑन व्हाट दिस पार्ट। The last part of your subquery is ultimately we can use subqueries with delete statement. Delete statement के साथ में भी हम लोग subqueries को use कर सकते हैं। Now you can see here the use of this particular delete query into what, in select query into what delete. So syntax is again same, delete from table name where value operator means what we can mention कंडीशन हियर, यानी आप लोगों को डिलीट कमांड के साथ में इसको क्या करना है, यूज करना है, और इसके साथ में आप सिलेक्ट क्वेरी जो भी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिलीट के साथ में भी आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल ये वाला न देते हुए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, टी में से ऐसे स्टूडेंट को निकाल देना है जिनका अटेंडेंस बिलो क्या है, बिलो 50% है। I want to delete the students whose attendance is what, delete from which table, tcom। कौन से स्टूडेंट्स को मुझे निकाल देना है, ओके वेयर क्लॉज में इसका लिख रहा हूं, वेयर रोल नंबर इन, ओके कौन से स्टूडेंट को मैं निकालना चाहता हूं, सिलेक्ट ओके रोल नंबर फ्रॉम tcom, ओके वेयर अटेंडेंस, ओके अटेंडेंस इज लेस देन 40। तो यहां पर देखिए क्या होगा, या 50 जो भी हम लोगों ने बोला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट कर दूंगा थर्ड ईयर कंप्यूटर में से। कौन से स्टूडेंट को, जो इन रोल नंबर के साथ में क्या होंगे, मैच होंगे। कौन से रोल नंबर के साथ में मैच होंगे, ऐसा रोल नंबर जिसका अटेंडेंस लेस देन क्या है, 50 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स को यहां पर रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल डिलीट के अंदर भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, यहीं पे यदि हम लोग दे देते थे वेयर अटेंडेंस is
लेस देन 50, फिर भी ये वाला कमांड जो भी है ये चलेगा, आपको तब इस ये सब क्वेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। आप कई तरीके से जो भी क्वेरीज है उसको आप लोग लिख सकते हैं। मैंने फिलहाल आप लोगों को सब क्वेरीज का मीनिंग समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग सिलेक्ट को डिलीट के अंडर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर सब क्वेरीज एंड आई होप you will enjoy the use of this particular subquery. So before I start with what the new clauses, okay, it's time of what quiz, and I hope you all must be ready for the quiz. Dear students, please focus on what quiz. I'm giving you what the quiz first on what the chat window of YouTube. ओके, यूट्यूब चैट विंडो के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, जो यूट्यूब के ऊपर है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस। आई एम शेयरिंग विथ यू व्हाट द पोल। मैंने YouTube चैट विंडो के ऊपर पोल को शेयर किया है, और अब मैं Zoom के चैट विंडो के ऊपर क्या कर रहा हूं, उसे शेयर करने जा रहा हूं। ओके, सो दैट यू ऑल कैन एबल टू वर्क आउट ऑन दैट। प्लीज गिव पोल वेरी सीरियसली। मैं ऐसे ही पोल्स आपको देता हूं कि जहां पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्या किया है, ऑलरेडी क्वेश्चंस को कवर किए हैं। So this is poll time. I have given you what poll on chat window of Zoom as well as what chat window of YouTube live. Okay, I'll wait for 1 minute and please give appropriate answer. Read it very carefully. Your poll will what considered for attendance. Mind it. जवाब आपका सही आए या गलत आए, लेकिन वो कंसिडर किया जाएगा। Okay, dear students, I'm launching the poll here as well. Those who are on Zoom can able to see the poll. Okay, this is the same poll I'm using. Okay, this is the same poll I'm using that I have already used into what your question answer window. Okay, वहां पे मैंने already आप लोगों को question answer window में ये दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Okay, same poll can be what seen to the students, those who are on what on Zoom window. Okay, I'm launching the poll so that you all can able to answer it. The poll is launched, okay, and your time is started. Only 1 minute is given to you. 98 students are there. Out of 98 students, you can give the right answer. Okay, very first question. Those who are on YouTube, you may not be able to view this particular poll. Okay, the question is, first question, subquery means query within query, or subpart of query, or subset of query, or none of the above. Okay, and the second question, can we add select clause in insert into command as a subquery? And the answer can be yes or no. It is yes or no type of question, so it's up to you. Okay, your time is up. Last 20 seconds are remaining. Almost 54 students have given. Okay, you have 15 more seconds. Go for it. Go for it. Last 5 seconds. Last 5 seconds. Okay, it's time to end the poll. I'm ending the poll. Okay, the poll is now end, and I'm sharing the results with you all. See, the result is like this. Subquery means total 80% of the students, means total 63 students have given right answer, that is query within query. I have already cleared you that subquery means query within query. Okay, these are wrong answers, sub part of query or subset of query. Okay, this is always query within query. So I'm happy that 88% students, your attentiveness is good today. I'm happy and really proud of you, my dear students. Today, your 88% students have given right answer. Right answer is query within query. 8% students have given sub part of query. That message for that 8% student is that the right answer is query within query. Then you can see the subset of what query, that is 6%. Okay, so 6% students ने subset of query ये जवाब दिया है. Right answer is what? Query within query. Let's look at the new second question, that is, can we add select clause in insert into command as a subquery? And the right answer is yes, and 97% students have given. I'm happy that total 73 students
have what participated into this particular poll, and out of that 70 students have given the right answer, that is yes. So right answer is yes. अभी अभी तो हम लोगों ने देखा, जो 3 लोगों ने यहाँ पे नो लिखा है ना, उन 3 लोगों के लिए मैसेज है। आप लोगों को अभी अभी तो मैंने दिखाया था कि हम लोग सिलेक्ट क्लॉज इंसर्ट इनटू के साथ में यूज कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम के साथ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी डीएमएल क्वेरीज है, डीएमएल क्वेरीज कौन सी है, हम लोग सिलेक्ट क्लॉज के साथ में यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट क्लॉज इंसर्ट क्लॉज के साथ में यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट क्लॉज हम लोग डिलीट के साथ में यूज कर सकते हैं और अपडेट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? यस। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर पोल। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म के थ्रू दिया रहेगा, आपको आपका जो भी स्कोर है वो भी वहां पर दिखाई देगा। सो आज से मैंने स्कोर जो भी वो ऐड किया है, यू कैन सी योर स्कोर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। और अब मुझे राइट आंसर जो भी है वो शेयर करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके, लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ क्लॉज एंड देन विल स्टॉप टुडे। Okay, so the type commonly used clauses of SQL, okay, so these are very very important. You can see that select clause, one of the very famous clause that you are using. Then you can use order by clause, you can use from clause, you can use group by clause, you can use having clause. One more clause is pending here and that is known as what? Where clause. यहाँ पर क्या पेंडिंग रह गया? Where clause पेंडिंग रह गया। तो टोटल कितने क्लॉजेस है आपको समझ में आएगा? सिलेक्ट क्लॉज, from clause, where clause, group by clause, having clause and order by clause. So दोस्तों entire SQL is actually divided into these many clauses: select, from, where, group by, having and order by clause. Okay, हम लोगों ने already select, from और where देखा है। कल से in tomorrow's lecture we will start with group by clause, having clause as well as what? Order by clause. ट्रस्ट मी, इन योर एग्जामिनेशन, ओके, या फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल में ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज या ऑर्डर बाय क्लॉज का 100% इस्तेमाल करना पड़ता है। मेनी टाइम्स इन एमएनसी, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हेन दे आर कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, वन ऑफ द पार्ट they are giving you certain queries and you need to write down the queries. Trust me, all that queries will be based on sub queries or it will be based on group by, having or order by clause. So these are very important clauses. I hope you all will study it thoroughly. So let's look at what exactly is this. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसमें दे देता हूँ। सिलेक्ट क्लॉज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, जहां पे हम लोग फील्ड्स के नाम दे सकते हैं। वी कैन गिव द नेम ऑफ फील्ड्स और वी कैन गिव स्टार। स्टार मींस इट विल रिप्रेजेंट ऑल फील्ड्स। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि आप लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर यू आर यूजिंग सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, तो ये क्या करेगा? जो भी रिडंडेंसी आती है नेम में उसको क्या कर देगा? अवॉइड करेगा। सो दैट इज सिलेक्ट क्लॉज। मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर ये सिलेक्ट क्लॉज में भी क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट एज अमाउंट, ये मैंने आपको दिखाया था। यानी क्या? सिलेक्ट क्लॉज के साथ में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहां पे आपको टेबल के या रिलेशन के नेम देने हैं। यदि एक टेबल का नाम होगा, आप सिंगल टेबल का नाम दोगे। एक से ज्यादा होगा, कॉमा सेपरेटेड आप लोगों को टेबल के नाम जो भी है वो वहां पर दे सकते हैं। आप यहां पर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्या? फ्रॉम टेबल नेम एज इट्स अलियास, यानी क्या? उस टेबल नेम का शॉर्ट नेम आपको यदि देना होगा, आप लोग फ्रॉम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड बहुत सिंपल है। कमांड किस तरीके से है? फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ओके, यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा नाम है ना, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एज एसआई, यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को आपने शॉर्ट नेम दे दिया एसआई। ये शॉर्ट नेम क्यों देना पड़ता है? क्योंकि कई बार हम लोगों को वो सिलेक्ट क्लॉज में या फिर वेयर क्लॉज में या फिर ग्रुप बाय क्लॉज में या फिर हैविंग क्लॉज में या फिर ऑर्डर बाय क्लॉज में वो शॉर्ट नेम का हम लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, माय एसक्यूएल इज combination of OR DBMS, that is object oriented DBMS as well as what? Relational DBMS। तो डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी फ्रॉम क्लॉज में जो टेबल के नाम आपने दिए हैं, आप डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू यानी टेबल का नाम डॉट फील्ड नेम, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आने वाले इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आने वाले जो भी क्लॉजेस है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रॉम क्लॉज को और भी डिटेल में लेके जा सकते हैं। कई बार सिलेक्ट क्लॉज भी फ्रॉम क्लॉज में आता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज इसके बनते हैं। जिन लोगों को इसमें करियर करना है उन लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट है। आप काफी काम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? ग्रुप बाय क्लॉज। जब भी ऐसे कोई क्वेरीज आपको आती है कि जहां पे आपको ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल टी कॉम्प, ये आपका एक ग्रुप है,
ओके आपको यदि लगा कि सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा किए हैं लेकिन मुझे क्या चाहिए, टी कॉम्प वाइज डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टी कॉम्प और उसका समरी, यानी क्या टी कॉम्प में कितने स्टूडेंट्स है, 82 स्टूडेंट्स है, 70 स्टूडेंट्स है, या जो भी कुछ है वो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज इज योर हैविंग क्लॉज। जब भी आपको कंडीशन देना रहेगा, जैसे मैंने वेयर क्लॉज आपको बोला था ना, यहां पर वेयर क्लॉज आप नॉर्मली क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स जो भी है उसको फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में हैविंग क्लॉज आता है, आप लोग हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल ग्रुप जो भी है उसको फिल्टर करने के लिए लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में और ज्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, ऑर्डर बाय क्लॉज इज योर फेवरेट क्लॉज, जहां पे आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको सॉर्टिंग करना है तब आप लोग हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट द एम ऑफ टुडेज लेक्चर। 1 मिनट इज पेंडिंग, सो आई एम गिविंग यू व्हाट अटेंडेंस एंड यू ऑल हैव टू व्हाट मार्क योर अटेंडेंस टुडे। ओके, तो आपको अटेंडेंस का जो भी लिंक है मैं शेयर कर रहा हूं और गूगल फॉर्म आप लोगों को मिलेगा अटेंडेंस का, वहां पर आप लोगों को क्या करना रहेगा, आपका अटेंडेंस जो भी है वो मार्क करना होगा। इसके बाद जिन लोगों को कुछ डाउट्स है आप लोग डाउट पूछ सकते हैं चैट विंडो में। Okay, I have given what attendance link on YouTube and now I'm giving attendance link on your Zoom. Mark your attendance. Okay, now you can unmute yourself and you can ask the question if you have. Dear students, you can ask the question. You can ask it on chat window or you can ask face to face. Sir, can we call order by clause as limit clause? Limit clause means what? Jayashree, I am not getting your question. ऑर्डर बाय क्लॉज का मीनिंग क्या होता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा आप सिलेक्ट क्लॉज के साथ में यदि ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्टेड मैनर में दिखा सकते हैं, आइदर इंक्रीमेंटल फैशन यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीमेंटल फैशन यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा सकते हैं। मुझे लिमिट क्लॉज का मीनिंग नहीं समझा। जयश्री, कैन यू प्लीज टेल मी दैट? जयश्री, इट वाज योर क्वेश्चन। सर मैंने नोट्स में देखा था कि ऑर्डर बाय क्लॉज को उन्होंने लिमिट क्लॉज कहा है। ओके, लिमिट क्लॉज का मीनिंग क्या है, आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, यानी आपको कितने रिकॉर्ड्स जो भी वो डिस्प्ले करने हैं, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स यदि आपको डिस्प्ले करने हैं तो आप क्या करोगे, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में लिमिट का इस्तेमाल करोगे, जहां पे आप लिमिट और उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यदि 5 देते हैं तो ओनली फर्स्ट टॉप 5 रिकॉर्ड्स आप लोगों को दिखाएंगे। ये लिमिट क्लॉज का नॉर्मली यूज कहां पर आता है, यदि आपको ये बोला गया कि फर्स्ट 5 टॉपर ऑफ द क्लास जो भी वो डिस्प्ले कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड जो भी है वो किस तरीके से देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके मार्क्स जो भी वो कर देंगे। इस ऐसा जब करेंगे तो पूरा के पूरे स्टूडेंट का लिस्ट वहां पर आएगा जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, लेकिन हमें टॉप 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, लिमिट क्लॉज का इस्तेमाल उसके साथ में कर सकते हैं। लिमिट इट टू व्हाट, ओनली 5 रिकॉर्ड, सो इट विल गिव यू व्हाट दैट एग्जैक्ट लिमिट का सिंटैक्स कैसा है, उसका कैसे यूज करना है, जब एक्चुअली वो आगे आने वाला है तब मैं आप लोगों को वहां पर दिखाऊंगा। फिलहाल ऑर्डर बाय क्लॉज ये सॉर्टिंग के लिए आप लोगों को काम आता है, और लिमिट ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आप लोगों को डिस्प्ले करने हैं उसके लिए आप लोगों को क्या आता है, काम आता है। होप इट इज क्लियर जयश्री? यस सर। ओके, Sharvari, you have asked that, sir, please explain again. What you want to explain? What do you want me to explain again? Sharvari, please. Sharvari, are you there? Any students having question into YouTube? YouTube वालों को कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स YouTube से, almost 18 students are there on YouTube. If you have any questions, I am observing what YouTube chat window as well. If you have question, you can ask. Okay, Sharvari, do you have, hope your question is clear? Okay, select within select. Okay. I'll explain that. The question is that, okay, the question is that explain, re-explain what select within select. तो मैं आप लोगों को वो explain करने जा रहा हूं फिर से. Okay. So this was the syntax we were using. Okay. सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट का मीनिंग क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट के अंदर ही सिलेक्ट को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम
from table where column name and we need to give what any sort of expression means यहाँ पे condition आपको देना है और वो condition किसके साथ में match होगा इस select statement के साथ में. Let's look at the example so that I can clear you about this. What exactly is this? Please focus properly. Okay, let me take annotation so that I can able to explain it properly. See that select star, okay, select star, this particular command will be used select star from employee where id in, यानी आपको क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसका आईडी ये दूसरे क्वेरी से आपको मिलेगा. ये क्वेरी क्या है? सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज व्हाट ग्रेटर देन 4500, यानी आपको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करने हैं जिसका सैलरी क्या रहेगा, ग्रेटर देन. सो दोस्तों, आपको एक अच्छा फेमस क्वेरी जो भी है, जो सिलेक्ट के साथ में सिलेक्ट का नॉर्मली यूज किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो क्वेरी में यहाँ पे लेता हूं सो दैट आपको और भी क्लियर होगा. ओके, कई बार आप लोगों को ये बोला जाता है कि वी हैव टू सिलेक्ट द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा होंगे. मुझे क्या चाहिए? जिनके मार्क्स, ओके, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स whose marks are greater than average marks of the class. ये वाला जो भी क्वेरी है ये समझ लीजिए क्या है. मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स क्लास के एवरेज मार्क्स से क्या है, ज्यादा है. माइंड इट, क्लास के एवरेज मार्क्स से क्या है, ज्यादा है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टाइम पे क्वेरी कैसा लिखते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम tcom where roll number, where the marks greater than average marks. ओके, इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं. ये एवरेज मार्क्स यानी क्या? एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन में आप लोगों का लूंगा. फिलहाल आपको ये समझना है कि एवरेज मार्क्स यानी क्या? ये एवरेज निकाल के देगा सारे क्लास के मार्क्स का. But always remember, you cannot use this average function with what? Where clause. It is not permissible. Okay, if you use this query, this will be what? It will be wrong. You will get 0 marks. Okay, you will get what? 0 marks. So what is the right query? So you can use the select under select. See that the right query I'm writing for you, select star from tcom. Okay, now you have to use what? Where clause, where marks. Now you use in, और कौन से मार्क्स? अगेन सिलेक्ट. ओके, क्या चाहिए आपको? मार्क्स. किसके मार्क्स चाहिए? जिसका, यानी आपको यहां पर क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स. यू कैन यूज this average function with select clause, but you cannot use this average function with what? Where clause. तो यहां पर माइंड कीजिए, you can use this average function को क्या बोला जाता है? aggregate function with select clause or having clause, but you cannot use this average function with what? Where clause. तो इसलिए ये वाला क्वेरी आपका रॉन्ग हुआ क्योंकि आपने वो इस तरीके से लिखा है. ओके, तो राइट आंसर इज दिस, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम tcom. आप इस क्वेरी को ठीक से ऑब्जर्व करें. ये क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम tcom. आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए tcom के, जो ये मार्क्स के साथ में क्या होंगे? मैच होंगे. क्या मार्क कौन से मार्क्स मैच होंगे? तो उसमें ये सब क्वेरी हम लोगों ने दिया है. ये सब क्वेरी क्या बोलता है? सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम tcom, यानी tcom का एवरेज मार्क्स क्या करेगा? ये कंप्यूट करके रखेगा और हमें क्या करना है? इसके मार्क्स इसके साथ में, यानी आपको ग्रेटर देन का यूज करना है तो आप यहां पर ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं. आप यहां पर ग्रेटर देन सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रेटर देन एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ऑलरेडी क्लॉजेस मैंने आप लोगों को कल सिखाए थे दोस्तों. ओके, सो आपके ऊपर करता है. आपको यदि सारे के सारे चाहिए, आप ग्रेटर देन ऑल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यस्टरडे ओनली आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू दिस पार्ट. ओके, फिलहाल आप लोगों के लिए ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं इसको इन कर देता हूं और ये आप समझिए व्हाट इज इट. इट इज अल्टीमेटली व्हाट? एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर tcom, और ये एक ही वैल्यू इसका आएगा, यानी पूरा एवरेज निकाल के देगा. वो एक वैल्यू जो भी है वो उस मार्क्स के साथ में आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. दैट वन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? दिस. तो तब जाके आपको राइट रिजल्ट्स आएंगे. सो दिस इज व्हाट द राइट क्वेरी. ओके, इस क्वेरी के लिए ये राइट क्वेरी है. तो ये जिन लोगों को ये क्वेरी चाहिए, मैं आप लोगों को चैट विंडो पे कॉपी करके देता हूं. आप लोग इस क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं सबसे पहले इसको यूट्यूब चैट के ऊपर क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं. ओके, इट हैज लिमिटेशन दैट यू कैन नॉट यूज दिस. ओके, लेट मी सेपरेट इट डाउन.
ओके तो मैंने ये शेयर किया है। अब मैं आपका जो भी चैट विंडो है उसमें भी ये शेयर कर देता हूं, जूम के चैट विंडो में भी, so that you can take this particular command ready-made. ओके स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली क्या है। ओके सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू दिस क्वेरी, रॉन्ग क्वेरी भी मैंने शेयर किया है और राइट क्वेरी भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप you might have understood the today's session. If you have any doubt, you can always ask me. Okay, if any other doubts are there, you can ask. जिनको डाउट है वो यहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी लोग एग्जिट ले सकते हैं क्लास से, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है। ऑलरेडी टाइम इज अप, ओनली 1 minute is remaining. Okay, okay, I think Sharvari, I have answered your query. Thank you, my dear students. Okay, and please practice for this SQL, because it is essential. Practice will only support you, so use MySQL for that. Thank you all. Please attend the next lecture.